भारत जोड़ो न्याय यात्रा रोज नए याम तय कर रही है। मणिपुर से पश्चिम बंगाल तक यात्रा में लोगों का कारवां बढ़ता ही जा रहा है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी अपनी टीम के साथ मुर्शिदाबाद जनता के साथ न्याय की ये यात्रा कर रहे हैं। क्या कुछ रहा इस आज की यात्रा में और क्या होगा कांग्रेस का आगे का प्लान जानने के लिए देखें ये वीडियो। I want people like Hemanto and Milind to leave. I'm perfectly okay with it. मेरे घर पे भी हो चुका है रेड वगैरह ये सब। My social media, YouTube, Facebook, is all shadow banned by the companies themselves. एक बात समझिए आप, आज लालू जी का इंटेरोगेशन चला, तेजस्वी का इंटेरोगेशन चला, सोरेन जी का इंटेरोगेशन चला, तो आप क्या सोच रहे हैं कि नीतीश जी ऐसे बिना दबाव के भाग गए क्या? मेरे चैनल पे इतना पॉलिटिकल प्रेशर जा रहा है और मेरे घर पे भी हो चुका है रेड वगैरह ये सब 60 आवर्स 2022 अगस्त 60 आवर्स चैनल पे 80 आवर्स मेरे घर पे 60 आवर्स। और शुरू में जब स्टार्ट हुआ 2-3 घंटे के बाद मुझे पता चल गया कि ये पिकनिक हो रहा है, आ रहे खा रहे बस सो रहे, पर 60 घंटे मुझे वो जो मेंटल ट्रॉमा झेलना पड़ा था उसकी वजह से। एंड स्टिल नाउ नोटिस आते ही रहते। एज अ इंडिविजुअल मेरी जो आइडियोलॉजी है, मैं कभी ऐसे बोल नहीं पाती हूँ, या कोई कुछ सोचता है कि सरकार को सवाल पूछती है तो इसका मतलब मेरे स्टेट में टीएमसी की दलाल कहा जाता है मुझे। If you're serious about your work, then you have to accept the fact that there is an ideological war going on. First of all, if you define idea with one language, one leader, one ideology, one religion, then there's no attack taking place. Then you're all fine. If you define India as a pluralistic country which has multiple languages, a negotiation between states, then there is an attack taking place. If you value Bengali, maybe there's an attack taking place, because at the end of the day, what the BJP is doing is attacking your history and your culture, your tradition, your religion, your language. Okay? So that's the first thing. Second thing is, it is not only the BJP that's doing it. It is multiple forces that have aligned that are doing it. Some of those forces are internal to India, some of those forces are external to India, some of those forces are political forces, some of them are economic forces, etc., etc., etc. Do you realize that my social media, YouTube, Facebook, Twitter, is all shadow banned by the companies themselves? Exactly. You realize that? Yeah. We have more than 10 million gig laborers here. Do you have any plan of a concrete movement? We've got a model which we've run in Rajasthan, Yeah. in a limited way, and then now we are testing in both Karnataka and Telangana, guaranteeing them certain minimum benefits, certain minimum support structures. आपने नागालैंड के मोकुकचुंग में कहा था कि महिलाओं को ज्यादातर पॉलिटिक्स पे आना चाहिए, नॉर्थ ईस्ट की स्पेशली, और बाद में आप और भी जगह जाएंगे, तो आपका ये बोलने का कारण क्या था? I mean, आप देखो यहाँ पे कितने लोग बैठे हैं? 10 लोग बैठेंगे, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 में से एक महिला है, आपकी 50% आबादी है। हाँ। क्या ये मतलब था मेरा कहना? And not only politics, Indian women are treated like dirt. I mean, ये हम बोलते रहते हैं कि भैया देवी हैं, ये सब करते रहते हैं. That's But the harsh truth that we have to it's the truth. The Indian women, whether they are at home, whether they're in their families, whether they're in workplace, whether they're in politics, they're treated very shabbily. It's a fact of life. So somewhere down the line, in Bengal as well, minorities are thinking it as a bipolar election. After Karnataka, after Telangana, do you think you are going to give much more importance to Bengal and Assam? Congress has a very deep history in Bengal. And I think in this fight against the BJP, Bengal is a very important counterweight. Rabindranath Tagore was not just speaking up, he was fundamentally involved in the fight against the British, much more than just speaking up. So I think that is important. DNA of Bengal, at least a huge part of the DNA of Bengal, is fundamentally against the idea of the RSS. Say they'll quote Vivekananda. Vivekananda has nothing to do with the BJP. Exactly. I mean, he's saying diametrically opposite things to the BJP.
আগামীকাল থেকে যে অধিবেশন শুরু হচ্ছে, বাজেট অধিবেশন, সেখানেও নাকি সিএ নিয়ে একটা কোনো আসতে চলেছে। হঠাৎ এই ইলেকশনের এলওপিও বলেছে। আবার কি মানুষকে দৌড় করানো হবে? The point is, these are all instruments for the BJP. But the basic idea is to divide the country, to create a tension between religious communities, to create a tension between languages, to create a tension between communities. But there are about 22 lakhs BD workers who work at about 150 rupees they get for rolling up 1,000 BDs. It looks about 1.5 days. And there are a huge number of migrant workers also in these two districts. So how this Bharat Jodo Nyaya Yatra will connect with them? There are almost 3 million people are depend on BD. Most of them are women. और आपको पता ही होंगे कि टोबैको पॉलिसी जो है उसमें तो बीडी वर्कर को सप्रेस करते करते मतलब इसको खत्म ही कर देना चाहता है। तो इसके लिए हमारे पास क्या ऑल्टरनेटिव है? Do you think a country like India in the 21st century can succeed without manufacturing? Absolutely No, You think there's any chance? no. Why? We need employment. And you simply cannot generate the levels of employment that you need Exactly. Because of from population. services. It is impossible. So, large country like India has to get into the business of production. Now, we've got a big thing going on about cell phones being made in India. Please understand, all the components come from China and they assembled a cell phone in India. It's a fundamentally different thing. So, India has accepted or has decided as a country that we can get away without production, and we can also get away with full disrespect towards our producers. How do you disrespect the producers? First of all, you shut the door of the banks to them. You just turn around and say, listen, anybody who wants to work in the BD industry, or a farmer, or somebody who wants to manufacture some little product, somebody who's from the small and medium industry who wants to make a component for this truck, you say, sorry boss, banks are not going to lend to you. Banks are only going to lend to the 3 or 4 or 5 Big fishes. big fishes. If by the way you have a problem as a farmer and you have a bad monsoon, or you have a bad rainfall, or as a BD worker you have some sort of a disaster, right? We're never going to forgive you. No waiver is No there. way. So if you need your bank loan forgiven, no. You're poor, you're a producer, never are we going to forgive you. Well, if you're a rent seeker, right, we are more than happy to forgive 14 lakh crores of bank loans. So over the last 10 years, there is a massive attack on the producers. One of the central pillars of this Nyaya that we are talking about is how to bring India back on track to production. আমরা দেখেছি যে স্বাধীনতার পর থেকে দীর্ঘদিন ধরে কংগ্রেস জাতীয় স্তরে ক্ষমতায় ছিলেন, বিভিন্ন রাজ্যে ক্ষমতায় ছিলেন, কিন্তু যত দিন যাচ্ছে কংগ্রেস ভাঙছে। আপনি বলছেন যে ইন্ডিয়ার সবচেয়ে কারাপ্ট মুখ্যমন্ত্রী হচ্ছে অসমের মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মা, কিন্তু সেই হিমন্ত বিশ্ব শর্মা তো আপনাদের এই সঙ্গেই ছিল এক সময়। জ্যোতিরাদিত্য সিন্ধিয়া, কিছুদিন আগে মহারাষ্ট্রের একজন সাংসদ তিনি চলে গেছেন। তো পরের বারে আবার অন্য কেউ কংগ্রেসের নেতা লিডাররা যে বিজেপিতে যাবে না বা চলে যাবে না, এইটা মানুষ কিভাবে আপনাদেরকে বিশ্বাস করবেন? I want people like Himanto and Milind to leave. Perfectly okay with it. Himanto represents a particular type of politics, right? That's not the politics of the Congress party. I mean, have you seen some of the statements that Himanto makes about Muslims? Yes, that's very demonizing. Have you seen them? Have you heard them? I don't want to have anything to do with them, because there's certain values that I like to defend. इंडिया जोट का जो एजेंडा है ये तो लोगों के पास अब तक पहुंचा नहीं है। लोगों का सवाल है, जो क्वेश्चन है, जो किसको हम वोट दें, ये आप लोग एक साथ नहीं, देखिए, ये हिंदुस्तान की जो जनता है ना, ये चीज़ों को बहुत गहरे तरीके से समझती है। हिंदुस्तान की जनता को 3-4 चीज़ें क्लियरली दिख रही हैं कि 5-6 लोगों को देश का पूरा धन पकड़ाया जा रहा है। दूसरी बात, महंगाई सब लोगों को चोट मार रही है। गरीब लोगों को हर स्टेट में महंगाई चोट मार रही है, बेरोजगारी हर स्टेट में चोट मार रही है। तो एजेंडा लोगों को बिल्कुल क्लियर मालूम है। एक बात समझिए आप, आज लालू जी का इंटेरोगेशन चला, तेजस्वी का इंटेरोगेशन चला, सोरेन जी का इंटेरोगेशन चला, केजरीवाल जी का इंटेरोगेशन
फिर से नोटिस आ फिर से गया। नोटिस आया। मेरा 55 घंटे इंटेरोगेशन चला। तो आप क्या सोच रहे हैं कि नीतीश जी ऐसे बिना दबाव के भाग गए क्या? वेस्ट बंगाल में ममता दी के साथ जो इंडिया अलायंस हुआ था, अभी उसका जो रवैया है वो यहाँ से भागते हुए देख रहे हैं, हम लोग सभी देख रहे हैं। तो इसमें ममता जी को इतना क्यों प्रायोरिटी दिया जा रहा है? हमारा इंडिया अलायंस है, ना ममता ने ना हमने इंडिया अलायंस तोड़ा है। ममता जी भी कह रही है कि मैं अलायंस में हूं, हम भी कह रहे हैं कि हम अलायंस में हैं। सीट की निगोशिएशन चल रही है, दोनों साइड से निगोशिएशन चल रही है, रिजॉल्व हो जाएगा।